हाय गाइस। तो हम लोग मिनियर्स डिसीज़ पढ़ने जा रहे हैं. सो मिनियर्स डिसीज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स भी कहते हैं इसको. एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स इज अ डिसऑर्डर ऑफ द इनर ईयर where the endolymphatic system is distended with endolymph. इट इज़ कैरेक्टराइज बाय पहला वर्टिगो आएगा, दूसरा सेंसोरो-न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, तीसरा टिनिटस होगा पेशेंट को, और चौथा सेंस ऑफ ऑरल फिलनेस. मतलब पेशेंट को वर्टिगो यानी कि चक्कर आएगा, लगेगा कि सब कुछ गोल गोल घूम रहा है. देन उसको हियरिंग लॉस होगा, देन उसका कान बजेगा, एंड देन कान में फुलनेस लगेगा. पैथोलॉजी क्या होता है? द मेन पैथोलॉजी इज डिस्टेंशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सिस्टम, मेनली अफेक्टिंग द कॉक्लियर डक्ट, स्केला मीडिया एंड द सैक्यूल. स्केला मीडिया, सो बेसिकली नीचे वाला को स्केला टिम्पराई बोलते हैं, स्केला मीडिया इस बीच वाला, एंड ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई होता है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? स्केला मीडिया में, बीच वाले में प्रॉब्लम आ रहा है. एंड द सैक्यूल, सैक्यूल जो हो रहा है वो भी डिस्टेंडेड हो जा रहा है. एंड टू अ लेसर एक्सटेंड द यूट्रिकल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल. सो यूट्रिकल से ज़्यादा और सेमी सर्कुलर से ज़्यादा कौन डिस्टेंड हो रहा है? सैक्यूल और स्केला मीडिया, ये दोनों डिस्टेंड हो रहा है. द डायलिटेशन ऑफ कोक्लियर डक्ट सच दैट it may completely fill scala vestibuli. There is marked bulging of the resinar membrane. So this is basilar membrane, और ऊपर वाला पार्ट को हम लोग रेसिनर मेम्ब्रेन कहते हैं. तो रेसिनर मेम्ब्रेन का बल्जिंग देखने को मिल सकता है, which may even herniate through the helicotrema into the apical part of the scala tympani. The distended saccule may come into सो इसका कॉज क्या होता है? सो द मेन पैथोलॉजी इन मीनियंस डिसीज इज डिस्टेंशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सिस्टम ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एंडोलिम्फ. This can result either from increased production of the endolymph or its faulty absorption, or both. Stria vascularis endolymph को mainly secrete करता है. So hi guys. So let's move on. Let's study Meniere. So Meniere's का पैथोलॉजी क्या होता है? Meniere's होता क्या है? एक सेकेंड.
लेट्स सी शशांक आया कि नहीं. हाय शशांक. शशांक, डिड यू कम? ओके, तो आगे पढ़ते हैं. सो कॉजेज़ क्या है ये मीनियर्स होने का. सो एंडोलिम्फेटिक में ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है. ठीक है. इट्स लाइक ग्लोकोमा ऑफ द आई, ग्लोकोमा ऑफ द ईयर, सॉरी. और फॉल्टी अब्जॉर्प्शन और बोथ. नॉर्मली एंडोलिम्फ जो होता है वो स्ट्राया वैसे. हाय शशांक. सो बेसिकली हम लोग मीनियर्स पढ़ रहे हैं, तो मीनियर्स में क्या होता है ना कि एंडोलिम्फ जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है या फॉल्टी अब्जॉर्प्शन उसका होता है, तो एंडोलिम्फ का अमाउंट बढ़ जाता है. तुम ऐसा इमेजिन करो जैसे ग्लोकोमा में होता है, सेम मीनियर्स में होता है. सो ये एंडोलिम्फ जो होता है वो सबसे अंदर का मेम्ब्रेन के भी अंदर एंडोलिम्फ होता है, तो उसका अमाउंट बढ़ जाता है. ठीक है. उसका अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पेशेंट को वर्टिगो होगा, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस होगा, टिनिटस होगा, सेंस ऑफ फुलनेस आएगा. ठीक है. उसको सुनाई नहीं देगा, उसको चक्कर सा आएगा, वर्टिगो, सब कुछ घूमेगा, पी करके आवाज़ में बजेगा एंड लगेगा कान पूरा भरा भरा हुआ. ये चार मीनियर्स का मेन सिम्टम्स होता है. सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि पूरा डिस्टेंड हो जाता है. और कौन सा साइड ज़्यादा डिस्टेंड होता है, तो कॉक्लिया वाला साइड. एंड कॉक्लिया से सटा हुआ कौन है, सैक्यूल. सैक्यूल है. तो सैक्यूल और कॉक्लिया ये दोनों पूरा डिस्टेंड हो जाता है. कॉक्लिया में भी कौन सा, स्केला मीडिया पूरा डिस्टेंड हो जाता है एंडोलिम्फ से. ठीक है. क्योंकि स्केला मीडिया में ही होता है एंडोलिम्फ. ठीक है. और सेमी सर्कुलर केनाल और यूट्रिकल जो होता है वो थोड़ा बहुत अफेक्टेड होता है, उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है. ठीक है. नाउ स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया जो है वो इतना ज़्यादा भर जाता है कि स्केला वेस्टिबुलाई को भी डिस्टेंड करने लग जाता है. रेसिनर मेम्ब्रेन तो पूरा डिस्टेंड हो जाता है. यहाँ तक कि हेलिकोटर्मा जो होता है वहाँ तक भी डिस्टेंड हो जाता है. नाउ जो सैक्यूल होता है वो डिस्टेंड करके स्टेपीज का फूड प्लेट में जाके लाई कर जाएगा. अब हम लोग कुछ जान लेते कि कॉज क्या होता है मीनियर्स का शशांक. सो डिस्टेंशन ऑफ द एंडोलिम्फेटिक सिस्टम टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द एंडोलिम्फ. सो जो एंडोलिम्फ होता है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, स्ट्राया वैस्कुलरिस, और अब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, एंडोलिम्फेटिक सैक. सो एग्जैक्ट कॉज मीनियर्स का अभी तक नहीं पता है, पर बहुत सारा थ्योरी, 6 थ्योरी डाला गया है. और वो 6 थ्योरी क्या है, लेट्स सी. पहला है डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक. सो नॉर्मली एंडोलिम्फ इज कैरिड बाय एंडोलिम्फेटिक डक्ट टू द sac where it is absorbed. जो नॉर्मली एंडोलिम्फ जो होता है ना वो इट इज़ कैरिड बाय एंडोलिम्फेटिक डक्ट टू द सैक वेयर इट इज़ अब्जॉर्ब. जो एंडोलिम्फेटिक सैक है वहाँ पे एंडोलिम्फेटिक डक्ट में ही अब्जॉर्ब हो जाता है. डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन बाय द सैक मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेज्ड एंडोलिम्फ pressure, experimental obstruction of endolymphatic sac and its duct also produces hydrops. Ischemia of the sac has been observed in cases of Meniere's disease. सैक का इस्केमिया भी देखा गया है मीनियर्स में. अंडरगोइंग sac surgery indicating poor vascularity and thus poor absorption by the sac. Distension of membranous labyrinth. membranous labyrinth जो है वो डिस्टेंड हो जाएगा, लीड टू द रप्चर ऑफ रेसिनस मेम्ब्रेन. रेसिनस मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगा एंड thus mixing of perilymph with endolymph, which is thought to bring about an attack of vertigo. ठीक है. एंडोलिम्फेटिक सैक अब्जॉर्ब नहीं किया तो फिर पूरा एंडोलिम्फ भरने लग गया, रेसिनल मेम्ब्रेन जो है वो फट गया और पेरिलियम से जा कर के वो मिल गया और उसके बाद अब वर्टिगो का अटैक आ गए, दोनों फ्लूइड मिल गए. तो ना वेजोमोटर डिस्टर्बेंस भी होता है. देयर इज सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी रिजल्टिंग इन स्पैज्म ऑफ इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी and or its branches, thus interfering with the function of cochlea or vestibular secretory
uh, vestibular sensory neuroepithelium. This is responsible for hearing loss in vertigo. So hearing loss के लिए क्या sympathetic overactivity होगा, क्यों? spasm of internal auditory canal की वजह से और sponges, thus interfering with the function of cochlea and vestibular sensory neuroepithelium. This is responsible for hearing loss and vertigo. Anoxia of capillary of stria vascularis. कैपिलरीज ऑफ स्ट्रायोवास्कुलरिस जो होता है उसमें अनोक्सिया आ जाता है. ऑल्सो कॉजेज इंक्रीज इन द परमिएबिलिटी विथ ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द एंडोलिम्फ. सो एलर्जी के वजह से भी हो सकता है मीनियर्स. द ऑफेंडिंग एलर्जन मे बी food stuff or inhalant. In these cases, inner ear act as shock organ, producing excess of endolymph. Nearly 50% of the patients with Meniere's disease have concomitant concomitant inhalant और food allergy होता ही है 50% को Meniere's वाले को. It is possible that Meniere's disease is a multifactorial results in the common end point of endolymphatic hydrops with classical presentation. Now sodium water retention भी होता है. Hello Shashank, are you there? Did you sleep? So excess amount of fluid are retained, leading to the endolymphatic hydrops. इसलिए ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए. Hypothyroidism. About 3% of the cases of the Meniere's disease are due to the hypothyroidism. Such cases benefit from thyroid replacement therapy. 3% हाइपोथायरॉयडिज्म को भी होता है. या हाय शशांक. सो ऑटो इम्यून एंड वायरल etiology भी हो सकता है. हैव ऑल्सो बीन सजेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन. नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है मेनियर्स का? तो एज एंड सेक्स. तो डिजीज इज कॉमनली सीन इन एज ग्रुप ऑफ 35 से 60 वाले एज ग्रुप में देखा जाता है. इट इज़ मोर प्रेवलेंट इन मेल्स दैन इन फीमेल्स. मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है मीनियर्स. यूजुअली डिजीज़ इज़ यूनिलैटरल, एक कान में ही होता है, बट द अदर ईयर मे बी अफेक्टेड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. तो कार्डिनल सिंड्रोम क्या होता है मीनियर्स डिसीज़ का? एपिसोडिक वर्टिगो आता है. एपिसोड में वर्टिगो आएगा. फ्लक्चुएंट हियरिंग लॉस. ठीक है, फ्लक्चुएट करेगा जो हियरिंग लॉस है. Patient will have tinnitus and sense of fullness or pressure in the involved ear. तो पहला vertigo. It comes in attack. The onset is sudden. The patient gets a feeling of rotation of himself in his environment. Sometimes there is feeling of to and fro or up and down movement. Attack comes in cluster and periods of spontaneous remission lasting for weeks, months, or years. Usually, an attack is accompanied by nausea and vomiting with ataxia and nystagmus. Nausea हो सकता है, vomiting हो सकता है with ataxia and nystagmus. Severe attacks may be accompanied by other symptoms of vagal disturbance such as abdominal cramp होगा, diarrhea होगा patient को, then cold sweat होगा, pallor, bradycardia. यूजुअली देयर इज़ नो वार्निंग सिम्टम. कोई वार्निंग सिम्टम नहीं होता है ऑफ एन ऑनकमिंग अटैक ऑफ वर्टिगो, बट समटाइम्स द पेशेंट मे फील अ सेंस ऑफ फुलनेस इन द ईयर, change in character of the tinnitus, or discomfort in the ear which herald an attack.
Some cases of Meniere disease shows uh, टूलियो फिनोमिनन, टूलियो फिनोमिनन भी दिखाता है, ठीक है. इट इज़ कंडीशन व्हेन वेयर लाउड साउंड और नॉइज प्रोड्यूस वर्टिगो. लाउड साउंड या फिर नॉइज जो होता है ना वो वर्टिगो को प्रोड्यूस करेगा एंड इज़ ड्यू टू द डिस्टेंडेड सैक्यूल लाइंग अगेंस्ट द स्टेपीज का फुट प्लेट. This phenomenon is also seen when there are three functioning windows in the ear. Example, a fenestration of a horizontal canal in the presence of mobile stapes. Hi Shashank. ये देख लेते etiological factor of symptomology of Meniere's disease endolymphatic hydrops. ये तुम लिख लेना, ठीक है शांक. सो डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन होगा सैक से, तब हमारा फ्लूइड बढ़ जाएगा. फूड या इनहेलेंट एलर्जी से होता है. ऑटो इम्यून प्रोसेस से होता है. वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पिस फैमिली से इन्फेक्शन होने से मीनियर्स हो सकता है. स्ट्रेस वेसोमोटर डिस्टर्बेंस से मीनियर्स होता है. सोडियम वाटर रिटेंशन से एंडोक्रेनियल से हो सकता है ना. इससे होगा क्या, ऑरल फुलनेस, टिनिटस, फ्लक्चुएंट हियरिंग लॉस, एपिसोड ऑफ वर्टिगो आएगा. ये क्या है, नॉर्मल कॉक्लियर डक्ट. सो कॉक्लियर डक्ट इज distended with endolymphatic pushing the resinar membrane into the scala vestivi. ये देखो ये नॉर्मल है और ये देखो पूरा एंडोलिम्फ भर गया तो रेसिनर मेम्ब्रेन जो ये वाला था वो पूरा डिस्टेंड होकर के इधर पुश करके स्केला वेस्टिबुलाई में पुश कर दिया ना. हियरिंग लॉस किस तरीके का होता है, तो इट यूजुअली accompanies वर्टिगो और मे प्रोसीड. Hearing improves after the attack and may be normal during the periods of remission. This fluctuating nature of hearing loss uh, is quite characteristic of the disease. With recurrent attack, improvement in hearing during the remission may not be complete. इम्प्रूवमेंट जो होता है वो शायद कंप्लीट ना भी हो. सम हियरिंग लॉस बीइंग एडेड इन द एवरी अटैक. कुछ कुछ हियरिंग लॉस हर अटैक में ऐड होने लग जाएगा, लीडिंग टू स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ द हियरिंग विच इज़ परमानेंट. बाप रे. Distortion of sound. So, some patients complain of distortion of hearing. A tone of particular frequency may appear normal in one ear and of higher pitch in the other, leading to डिप्लेकोसिस. मतलब कुछ बोल रहे हैं, एक कान में नॉर्मल सुनाई दे रहा है, एक कान में हायर आवाज़ सुनाई दे रहा है. हाय शशांक. म्यूजिक अपीयर्स डिस्कॉर्डेंट. Intolerance to loud sound. Patient of Meniere's disease cannot tolerate amplification of sound due to recruitment phenomenon. They are poor candidate for hearing aid. Hearing aid भी नहीं लगा सकते Meniere's में. Now tinnitus होता है. It is a low pitched roaring type and is aggravated during acute attack. Sometimes it has a hissing character. ठीक है, tinnitus को hissing character होगा. It may persist during periods of remissions. A change in intensity and pitch of tinnitus may be a warning symptom of the attack. टिनिटस चेंज होगा तो वार्निंग सिम्टम है कि अटैक आने वाला है. ठीक है. सेंस ऑफ फुलनेस ऑफ और प्रेशर लाइक अदर सिम्टम्स इट ऑल्सो फ्लक्चुएट्स. इट मे कंपनी और प्रोसीड एन अटैक ऑफ वर्टिगो. अदर फीचर्स क्या होता है, पेशेंट ऑफ Meniere's disease often show signs of emotional upset due to apprehension of repetition of attacks. Earlier the emotional stress was considered to be द कॉज ऑफ Meniere's डिजीज़. पर होता क्या है, Meniere's की वजह से इमोशनल स्ट्रेस लोगों को हो रहा है. एग्जामिनेशन क्या करेंगे, ओटोस्कोपी करेंगे. नो abnormality is seen in the tympanic membrane. निस्टैग्मस जो होगा इट इज़ सीन ओनली ड्यूरिंग अक्यूट अटैक. निस्टैग्मस जो है आँख जो इधर उधर घूमेगा वो बस अक्यूट अटैक में. द क्विक कॉम्पोनेंट ऑफ निस्टैग्मस इज टूवर्ड्स द अनअफेक्टेड ईयर. Thank you, Shank. Tuning fork test.
नाउ हम लोगों ने क्या किया, निस्टैगमस देखा, ओटोस्कोपी देखा एग्जामिनेशन में। ओटोस्कोपी में नॉर्मल हुआ, निस्टैगमस मिलेगा एक्यूट अटैक में। और ट्यूनिंग फॉक टेस्ट में क्या होगा, दे इंडिकेट सेंसरो न्यूरल हियरिंग लॉस। रेने टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन रिड्यूस्ड इन द अफेक्टेड ईयर हो जाएगा, वेबर्स जो हो जाएगा लैटरलाइज्ड इन द बेटर ईयर। ठीक है, डन। नाउ इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, पीटीए। एक बार रेनेस और वेबर्स देख ले क्या। रेनेस और वेबर्स देख लेते हैं एक बार। सो रेने पॉजिटिव किस किस केस में होता है, नॉर्मल इंसान में या फिर सेंसोरी न्यूरल डेफनेस में। नेगेटिव किस में होता है, कंडक्टिव डेफनेस से अगर, या फिर सीवियर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। अब नेगेटिव में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है कि कंडक्टिव है या फिर सीवियर सेंसोरी न्यूरल है, तो क्या करेंगे हम लोग, वेबर्स करेंगे। वेबर्स क्या होगा, लैटरलाइज कर जाएगा वर्स ईयर में अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, और लैटरलाइज कर जाएगा बेटर ईयर में अगर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या करेंगे मीनियर्स के लिए। सो ये 6 इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं मीनियर्स के लिए। पहले तो पीटीए करेंगे, देयर सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। इन अर्ली स्टेज लो फ्रीक्वेंसी पहले अफेक्ट होगा, एंड द कर्व इज ऑफ राइजिंग टाइप। When higher frequencies are involved due to progression of the disease over the year, the curve becomes flat या फिर falling type हो सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे दिस इज तुम्हारा, दिस इज एयर कंडक्शन। एयर कंडक्शन कितना ज़्यादा फॉल कर रही है, दिस इज एयर कंडक्शन, दिस इज बोन कंडक्शन, दिस इज बोन कंडक्शन। ऑडियोग्राम इन अर्ली मीनियर्स, ये अर्ली मीनियर्स का है ये वाला और ये वाला, और ये लेट मीनियर्स का है। नोट हियरिंग लॉस ऑफ सेंसोरो न्यूरल और मोर इन लोअर फ्रीक्वेंसी। लोअर फ्रीक्वेंसी जो है उसमें, हायर फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा इस बार हो रहा है, राइजिंग कर्व है, ये देखो इधर ज़्यादा लॉस हुआ है, बट देन बाद में जो हायर फ्रीक्वेंसी वाला ज़्यादा लॉस हो रहा है। As a disease progresses, middle or higher frequency gets involved, audiogram becomes flat or falling type. ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, स्पीच ऑडियोमेट्री करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन स्कोर इज़ यूजुअली 55 to 85% बिटवीन द अटैक्स, बट डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी इज़ मच इम्पेयर्ड ड्यूरिंग एन इमेंस फॉलोइंग एन अटैक। नाउ स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट, they indicate the cochlear nature of the disease। ऑडियोमेट्री करेंगे, cochlear nature of the disease, and thus helps to uh, differentiate from retrocochlear lesion। acoustic neuroma से differentiate करेगा स्पेशल अकाउस्टिक टेस्ट। सो रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी लाउड साउंड बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा उनके लिए। ऐसा ही जो होता है शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स, मतलब थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट करेंगे आवाज़ का डेसिबल में, देन पेशेंट को पता चल जाएगा। SI score is better than 70% in two-thirds of the patient. Normal 15% होता है. Now tone decay test. Normally there is decay of less than 20 decibel. These days MRI with contrast is the investigation of choice for the diagnosis of retrocochlear lesion, and the special audiometry tests are rarely required. Now, electrocochleography, it shows changes diagnostic of Meniere's disease. Normally, the ratio of somatic potential of action or to action potential is 30%. Meniere's disease, the somatic potential by action potential का ratio जो होता है, it is greater than 30%. कैलोरिक टेस्ट करेंगे, सो इट शोज रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स टू अफेक्टेड साइड इन 75% ऑफ द केस। ऑफन इट रिवील्स अ कैनाल पैरालिसिस और द affected side most common, but sometimes there is directional preponderance to healthy side or a combination of both canal paralysis on the affected side and directional
preponderance on the opposite side. अब glycerol test. So glycerol is a dehydrating agent. When given orally, it reduces endolymph pressure and thus causes an improvement in hearing. Patient is given glycerol with an equal amount of water and little flavoring agent or lemon juice. Lemon juice के साथ glycerol देते हैं. Audiogram and speech discrimination score are recorded before and 1-2 hour after ingestion of glycerol. तो ग्लिसरॉल क्या करता है? हाइड्रेटिंग एजेंट होता है. तो ये जो है एंडोलिम्फा का प्रेशर कम कर देगा. सो इम्प्रूवमेंट ऑफ 10 डेसिबल हियरिंग लॉस ठीक कर देगा. 10 डेसिबल इन 2 or more adjacent octaves or a gain of 10% discrimination score, the makes the test positive. There is also improvement in tinnitus and in sense of fullness in the ear. The test has diagnostic and prognostic value. These days, glycerol test is combined with electrocardiogram. This is the normal ear. This is the ear with Meniere's disease. ठीक है. नॉर्मल ईयर में हम लोग देख सकते हैं ये एस पी है. दिस इज द ए पी. बट वी कैन सी ये कितना ऊपर आ रहा है ग्राफ. सो ईयर विथ मीनियर्स डिजीज वोल्टेज ऑफ समेटिंग पोटेंशियल इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ एक्शन पोटेंशियल. Normally, summating potential is 30% action of action potential. The ratio is enhanced in Meniere's disease. तो Meniere's disease में हम लोग देख सकते हैं कि summating potential और action potential का रेशियो 30% से ज़्यादा हो गया है. मतलब ये देख सकते हैं कि समेटिंग पोटेंशियल कितना ज़्यादा बढ़ गया है. ये देखो 30% है. दिस इज़ मोर देन 50% ब्रो. हाँ ये देख लेते हैं. रिजल्ट ऑफ वेरियस टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट कोक्लिया फ्रॉम अ रेट्रोकोक्लियर फंक्शन. तो कोक्लियर लीशन है, ये रेट्रोकोक्लियर है और ये दिस इज द नॉर्मल. सो पीटीए अगर करेंगे तो पीटीए में नॉर्मल का तो नॉर्मल आएगा. कोक्लियर का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस दिखाएगा. रेट्रोकोक्लियर का भी सेंसरी न्यूरल दिखाएगा. स्पीच डिस्क्रिमिनेशन को 90 to 100% नॉर्मल का होता है. बट कोक्लियर में बिलो 90% होगा और रेट्रोकोक्लियर में वेरी पुअर होगा स्पीच डिस्क्रिमिनेशन को. रोल ओवर फिनोमिनन इसमें एब्सेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा. रोल ओवर फिनोमिनन बस रेट्रोकोक्लियर लीशन में प्रेजेंट होता है. शशांक तुम मुझे बता सकते हो रोल ओवर फिनोमिनन क्या होता है? देन रिक्रूटमेंट नॉर्मल में तो एब्सेंट होता है, कोक्लियर रीजन में प्रेजेंट होगा और रेट्रोकोक्लियर में एब्सेंट होगा. रिक्रूटमेंट इज सीन इन कोक्लियर. रोल ओवर फिनोमिनन इन सीन इज रेट्रोकोक्लियर. ठीक है. एस आई जो स्कोर होता है 0 से 15% नॉर्मल होता है कि सेंसिटिविटी कितना है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट ऑफ डेसिबल से. पर कॉक्लियर में 70% होता है, रेट्रोकॉक्लियर में 20%. ऑलमोस्ट नॉर्मल है. थ्रेश होल्ड टोन डिके जो होता है वो 10 से 15 डेसिबल थ्रेश होल्ड से टोन डिके हो जाता है. फोरामैन रोल ओवर फिनोमिनन, मैंने बोला रोल ओवर फिनोमिनन. थ्रेश होल्ड टोन डिके जो होता है वो लेस देन 25 डेसिबल अबव 25 डेसिबल होगा. ठीक है. स्टेपिडियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट प्रेजेंट और रेट्रोकोक्लियर में एब्सेंट हो जाता है स्टेपिडियल रिफ्लेक्स. स्टेपिडियल रिफ्लेक्स डीके जो है वो नॉर्मल होता है. नॉर्मल में कोक्लियर में भी नॉर्मल होता है बट रेट्रोकोक्लियर में अब नॉर्मल हो जाता है. बेरा जो होता है नॉर्मल इंटरवल बिटवीन वेव 1 and 5 दिखेगा. बट बेरा जो है नॉर्मल इंटरवल बिटवीन वेव 1 and 5 होगा और इसमें रेट्रोकोक्लियर में वेव 5 जो है वो डिलेड होगा या एब्सेंट होगा. सो हम लोग देख लेते हैं वेरिएंट ऑफ मेनियर्स डिजीज़. मतलब मीनियर्स का भी वेरिएंट है, वो देख लेते क्या क्या है. इट्स ऑलमोस्ट डन यार. 3 पेज और है. ओके सो यू रोट समथिंग.
So disease in speech discrimination score at higher sound intensity rollover phenomenon होता है. Decrease in speech discrimination score. अच्छा, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर जो है वो डिक्रीज कर जाता है हायर साउंड इंटेंसिटी में. इसको रोल ओवर फिनोमेनन कहते हैं, जो कि ज़्यादा देखने को मिलता है रेट्रोकोक्लियर यानी कि नर्व वाले प्रॉब्लम्स में. ठीक है, अब देखते हैं वेरिएंट ऑफ मीनियस डिजीज़. तो मीनियस डिजीज़ का वेरिएंट क्या होता है? सो कोक्लियर hydrops. Here, only the cochlear symptoms and signs of Meniere's disease are present. Vertigo नहीं होता है. It is only after several years that vertigo will make will make its appearance. It is believed that in these cases there is block at the level of ductus reunions, thereby confining increase in the endolymphatic pressure to the cochlea only. ठीक है, तो पहला वेरिएंट क्या है? कोक्लियर हाइड्रॉप्स. दूसरा क्या है? वेस्टिबुलर हाइड्रॉप्स. इसमें क्या होता है? द पेशेंट इसमें बस सुनाई ज़्यादा कम देगा. ठीक है, मतलब सुनाई कम देगा. वेस्टिबुलर हाइड्रॉप्स में क्या होगा? द पेशेंट गेट टिपिकल अटैक ऑफ एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो, वाइल कोक्लियर फंक्शन नॉर्मल रहेगा. तो इसको वेस्टिबुलर हाइड्रॉप्स कहेंगे. ठीक है, it is only with time that typical picture of Meniere's disease will develop. Many of these cases of vestibular um, Meniere's disease are labeled as recurrent vestibulopathy, as endolymphatic hydrops cannot be demonstrated in the study of temporal bone in such cases. Now drop attack क्या होता है? ड्रॉप अटैक को हम लोग टूमार्किन्स ओटोलिथ क्राइसिस भी कहते हैं. इन दिस केस देयर इज सडन ड्रॉप अटैक विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. There is no vertigo or fluctuation in hearing loss. The patient gets a feeling of having been pushed to the ground. ऐसा लगेगा कोई धक्का दे दिया पेशेंट को. और polexed. It is an uncommon manifestation of Meniere's disease and occurs either in early or late course of the disease. So, the possible mechanism is deformation of the otolith membrane. Macula जो होता है ना, उसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा ऑफ द यूट्रिकल एंड सैक्यूल ड्यू टू द चेंजेस इन द एंडोलिम्फेटिक का प्रेशर. सो दिस इज डक्टस reunions. Now we have Lermois syndrome. डक्टस ये जो है कि कोक्लियर हाइड्रॉप्स कहते हैं ना, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो हाँ, डक्टस रियूनियंस में अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो कोक्लियर हाइड्रॉप्स होता है. यानी यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरने लगेगा और कोक्लियर मतलब हियरिंग लॉस होगा. अब लेरमोइज लेरमोइज सिंड्रोम क्या है? ईयर syndromes of Meniere's disease are seen in reverse order. First there is progressive disorientation of hearing. पहले सुनाई नहीं पड़ेगा, then followed by attack of vertigo, at which time the hearing recovers. Now Meniere's disease versus Meniere syndrome. ठीक है, Meniere's disease is an idiopathic condition. ठीक है, पर Meniere's syndrome होता है दो resembling Meniere's disease, clinically episode of vertigo, fluctuant hearing loss, tinnitus, earfulness results from variety of conditions such as trauma. So syndrome जो है ये idiopathic नहीं होता है, ये conditions होते हैं इसको होने के लिए, और ये idiopathic होता है. ट्रॉमा की वजह से हेड इंजरी, ईयर का सर्जरी, या फिर वायरल इन्फेक्शन फॉलोइंग मीजल्स एंड मम्प्स, या फिर सिफिलिस कंजेनाइटल या फिर लेट मतलब लेट एक्वायर्ड, या कोगन्स सिंड्रोम, ये सब होने के बाद मीनियर्स हो रहा है. ओटोस्क्लेरोसिस, ऑटो इम्यून डिजीज, तो हम लोग सिंड्रोम कहेंगे. सिंड्रोम मतलब कलेक्शन ऑफ डिजीज़ होता है, तो ये सब होने के बाद अगर वो मीनियर्स हो रहा है तो हम लोग सिंड्रोम कहेंगे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मीनियर्स डिजीज़. नाउ डायग्नोसिस ऑफ मीनियर्स डिजीज़. मीनियर्स को कैसे तुम डायग्नोस करोगे? सो कमिटी ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटो लैरिंगोलॉजी, हेड एंड नेक सर्जरी
क्लासिफाइड, AAOHNS। अगर हम लोग ऐसा देखें, एक एक वर्ड छोड़ दे, तो AHS, और ऑन आ जाएगा बीच में। AAOHNS है। क्लासिफाइड द डायग्नोसिस ऑफ मिनियस डिजीज एज फॉलो। सर्टेन किसको बोलेंगे? डेफिनेट मिनियस डिजीज कंफर्म्ड बाय हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी करवाए हैं एंड कंफर्म हो गया है कि मिनियस है, तो उसको सर्टेन बोलेंगे। डेफिनेट किसको बोलेंगे? दो या दो से, टू और मोर डेफिनेट डेफिनेटिव स्पॉन्टेनियस एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो। अपने आप वर्टिगो आया, लास्टिंग फॉर 20 मिनट्स या लॉन्गर, 20 से ज़्यादा मिनट से रहा वर्टिगो। ऑडियोमेट्री डॉक्यूमेंटेड हियरिंग लॉस ऑन एटलीस्ट वन ओकेजन में सुनाई नहीं पड़ा। टिनिटस या ऑरल फुलनेस इन द अफेक्टेड ईयर व ऑल अदर कॉजेज एक्सक्लूडेड। तो हम लोग डेफिनेट बोलेंगे। प्रोबेबल किसको बोलेंगे? वन डेफिनेट एपिसोड ऑफ वर्टिगो, ऑडियोमेट्री डॉक्यूमेंटेड हियरिंग लॉस ऑन एटलीस्ट वन ओकेजन। टिनिटस और ऑरल फुलनेस इन ट्रीटेड ईयर। नाउ अदर कॉजेज एक्सक्लूड कर देंगे तो पॉसिबल क्या होगा? सो पॉसिबल विल बी एपिसोडिक वर्टिगो ऑफ मिनियस टाइप विदाउट डॉक्यूमेंटेड हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस नहीं हो रहा है तो पॉसिबल होगा। सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड विथ डिस्क इक्विलिब्रियम बट विदाउट डेफिनेटिव एपिसोड, कॉक्लियर वेरिएंट और कॉजेज एक्सक्लूडेड। तो चार होता है, क्या होता है? सर्टेन, डेफिनेटिव, प्रोबेबल और पॉसिबल। ठीक है। नाउ स्टेजिंग ऑफ मीनियस डिजीज, दिस कैन बी डन इन सर्टेन एंड डेफिनेटिव केसेस ऑफ मीनियस डिजीज। It is based on the average of pure tone threshold, 0.5123 kilohertz, round to the nearest whole of the worst audiogram during a period of 6 months before treatment. I'm so sorry, मुझे हिचकी आ रही है। ट्रीटमेंट क्या होता है? सो जनरल मेजर्स होता है, मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट अटैक होता है, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक फेज होता है, एंड देन वी हैव सर्जिकल ट्रीटमेंट। और ये चैप्टर एंड हो जाएगा, बस ट्रीटमेंट है। अब बस ट्रीटमेंट बचा है। लेट्स रीड ट्रीटमेंट एंड लेट्स गेट डन विथ Meniere's. Diagnosis of Meniere's disease: certain, definitive, probable and possible. Very good, Shashank. Very good. Now, general measures क्या होता है? Reassurance. The patient anxiety can be relieved by reassurance and by explaining the true nature of the disease. This is particularly important in acute attack. ये श्योर करेंगे। फिर सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, निकोटीन कॉजेज वेजोस्पैज्म, स्मोकिंग शुड बी कम्प्लीटली स्टॉप्ड। फॉर सम पेशेंट दिस मे बी द ओनली ट्रीटमेंट नेसेसरी। स्मोकिंग बोलेंगे पूरी तरीके से छोड़ दो। फिर लो सॉल्ट डाइट, पेशेंट शुड टेक सॉल्ट डाइट as far less salt diet as far as possible. No extra salt should be permitted. Salt intake should not exceed 1.5 से 2 ग्राम पर डे। ठीक है। अवॉइड एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी भी ज़्यादा नहीं पीना। अवॉइड ओवर इंडल्जेंस इन कॉफ़ी, टी, अल्कोहल। अवॉइड स्ट्रेस एंड ब्रिंग अ चेंज इन लाइफस्टाइल चेंज करो। मेंटल रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, योगा आर हेल्पफुल टू डिक्रीज स्ट्रेस। अवॉइड एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग गुड बॉडी बैलेंस वाला एक्सरसाइज मत करो। एज द अटैक ऑफ Meniere disease is abrupt and sometimes with no warning symptoms, professions such as flying, underwater diving and working at great heights should be avoided. Now this is the staging of Meniere's. स्टेज 1 में क्या होता है? प्योर टोन एवरेज इन डेसिबल इन प्रीवियस 6 मंथ में लेस देन 25 डेसिबल का आई गेस हियरिंग लॉस हुआ है। स्टेज 2 क्या होता है? 26 से 40 डेसिबल का हियरिंग लॉस हुआ है 6 महीने में। स्टेज 3 क्या होता है? 41 से 70
डेसिबल का हियरिंग लॉस है, स्टेज 4 इज़ मोर देन 70 डेसिबल। अच्छा, ये याद है कि हम लोग कैसे हियरिंग लॉस को कैसे हम लोग स्टेज करते थे? सीवियर, मॉडरेट था, मॉडरेटली सीवियर था, देन सीवियर था, याद है शशांक? देन प्रोफाउंड था। सारे में हम लोग 15-15 डेसिबल इंक्रीज कर देते थे, 25 डेसिबल से शुरू करो। जो प्रोफाउंड था उसमें 20 डेसिबल हम लोग इंक्रीज करते थे। Do you remember? No, you don't remember. Oh my God, let me teach you first. So we had पूरा हियरिंग लॉस में वी हैड दिस चार्ट ना, जो कलर से भी शो किया हुआ था। वेयर डिड इट गो मैन? या इसमें मिल जाएगा हियरिंग लॉस। ये तो दिस इज़ मिनिमम लॉस, इसको कंसिडर भी नहीं किया जाता है। दिस इज़ माइल्ड, ठीक है, ये याद रखना, माइल्ड। इसमें क्या होता है, 15 डेसिबल का लॉस होता है, 25 से शुरू करना, 25 से 40, ठीक है। माइल्ड के बाद क्या होगा, मॉडरेट। मॉडरेट के बाद क्या होगा, मॉडरेटली सीवियर। अब तुम देख सकते हो कि ये येलो थोड़ा बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि ये 20 का डिफरेंस है, ये सब 15 का डिफरेंस है, ये 20 का डिफरेंस है। ये 20 का डिफरेंस सीवियर लॉस है, एंड दिस इज प्रोफाउंड लॉस, ये भी 20 का है। सो तुम ये याद कर लेना, 70 to 90 इज सीवियर लॉस। ठीक है शशांक, ये हो गया माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर लॉस, प्रोफाउंड लॉस। हो गया शशांक? हे शशांक, ना ये हम एक बार तुमको बता देते हैं, दिस इज़ व्हाट इट इज़। और फिर डिग्री ऑफ WHO क्या बोलेगा, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर, प्रोफाउंड, ये डिग्री ऑफ WHO है। ये थ्रेशोल्ड तुमको लिखना पड़ेगा क्या क्या होता है। एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, तो ये फर्स्ट वाला जो होता है माइल्ड, उसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी विथ फेंट स्पीच, बहुत फेंट स्पीच है इस तरीके से, तब डिफ़िकल्टी होगा माइल्ड वाले में। मॉडरेट में क्या होगा, फ्रीक्वेंटली डिफ़िकल्ट विथ नॉर्मल स्पीच, मतलब नॉर्मल स्पीच में इसको प्रॉब्लम होगा। फिर मॉडरेटली सीवियर में क्या होगा, फ्रीक्वेंटली डिफ़िकल्ट इवन विथ लाउड स्पीच, लाउड स्पीच में भी प्रॉब्लम होगा। सीवियर में क्या होगा, कैन अंडरस्टैंड ओनली, और शाउटेड जब होगा या फिर एम्पलीफाइड स्पीच में ही समझ पाएगा। एंड प्रोफाउंड में क्या होता है, यूजुअली कैन नॉट अंडरस्टैंड इवन एम्पलीफाइड स्पीच। पता है मेरे नाना जी का ना, शाउट करते तब सुनाई देते, यानी सीवियर लॉस है उनका, 70 to 90 डेसिबल का लॉस है। या हो सकता है मॉडरेटली सीवियर भी होगा, लाउड, लाउड स्पीच में फ्रीक्वेंटली डिफिकल्टी इवन इन लाउड स्पीच। चलो मीनियस पढ़ लेते हैं। सो मैनेजमेंट पढ़ रहे थे ना हम लोग। ओ माय गॉड, मुझे भूख लग रही है। टाइम कितना हो गया? 8:30 हो गया। अच्छा, हम 10 मिनट में ख़त्म करके फिर विल गो टू ईट, ठीक है। अवॉइड एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग गुड बॉडी बैलेंस, वो हम लोग पढ़ लिए। मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट अटैक क्या होगा, ड्यूरिंग अक्यूट अटैक, ड्यूरिंग द अक्यूट अटैक देयर इज सीवियर वर्टिगो with nausea and vomiting. The patient is apprehensive. Head movement provoke greediness. Therefore, treatment would consist of reassurance and psychological support to allay worry and anxiety. Bed rest with head का support on pillow to prevent excessive movement. So bed rest करेंगे पिलो के साथ, रीअश्योर करेंगे। अक्यूट अटैक मतलब आ रहा है अटैक, तब क्या कर रहे हैं। फिर आईवी फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट देंगे पेशेंट को टू कम्बैट द लॉस ड्यू टू वॉमिटिंग। वेस्टिबुलर सेडेटिव्स देंगे to relieve vertigo. They should be administered IM या फिर IV if vomiting precludes oral administration. Drug useful in acute attacks are dimethylhydrinate,
promethazine, thioclate, prochlorprezazine, diazepam, 5 से 10 mg। डाइजीपैम तो सीजर में देते हैं ना, मे बी गिवन IV. It has a tranquilizing effect and also suppresses the activity of medial vestibular nucleus. Some patient acute attack can be stopped by atropine भी दे सकते हैं subcutaneous. मुझे बहुत भूख लग रही है गॉड. वेजोडाइलेटर्स दे सकते हैं जैसे कि कार्बोजेन is a good cerebral vasodilator and its inhalation improves labyrinthine circulation. Now management of chronic phase में क्या करते हैं? When the patient presents after the acute attack, the treatment consists of vestibular sedatives. So prochlorprezine देंगे vestibular sedative, ठीक है, 2 मंथ के लिए. उसके बाद रिड्यूस कर देंगे 5 mg थ्राइस अ डे फॉर अनदर मंथ. बेसिकली 3 मंथ के लिए हम लोग वेस्टिबुलर सेडेटिव्स दे रहे हैं. क्रॉनिक फेज का मैनेजमेंट है. देन वेसो डायलेटर देंगे जैसे बीटा हिस्टिडीन 24 mg ट्वाइस. तो वो इंक्रीज लैब्रेंथाइन ब्लड फ्लो बाय releasing histamine in the body. It is contraindicated in asthma as it may cause bronchospasm. Then diuretics देंगे, sometimes diuretics furosemide taken on alternate days with potassium supplementation to help control a recurrent attack not controlled by vasodilation. Vestibular sedatives. मुझे let's complete this one. So diuretics देते, chronic phase में क्या देते? Vestibular sedative, vasodilator, diuretics, propantheline bromide. साइड इफेक्ट की वजह से ये बहुत लोग प्रेफर नहीं करता है इससे, प्रोपैनथिलीन ब्रोमाइड को. देन एलिमिनेशन ऑफ एलर्जन, डिसेंसिटाइजेशन भी कर देंगे एलर्जन का. हार्मोन जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है तो एप्रोप्रिएट लिपोसुल थेरेपी देंगे. स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे बाय चेंज इन लाइफस्टाइल ताकि ये रिकरेंट अटैक्स प्रिवेंट हो सके. 80% पेशेंट को हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट ही कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ठीक रहेंगे. इंट्राटिम्पैनिक जेंटामाइसिन थेरेपी, केमिकल लैब्रेंथेक्टमी क्या होता है? जेंटामाइसिन इज मेनली vestibulotoxic होता है. It has been used in daily or bi-weekly injection in the middle ear. Drug is absorbed through the round window and causes destruction of the vestibular labyrinth. Total control of vertigo spell has been reported to 60 to 80% of the patients, with some relief from symptoms in others. Hearing loss, sometimes severe and profound, has been reported in 4 to 30% of the patients treated with this mode of therapy. तो बेसिकली जेंटामाइसिन दे देते हैं तो वेस्टिबुलोटॉक्सिक होता है ताकि वर्टिगो ठीक हो सके, बट हियरिंग लॉस उससे एक साइड इफेक्ट होता है. देन माइक्रोविक्स क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल विक्स मेड ऑफ polyvinyl acetate, measures 1 millimeter into 9 millimeter. It is meant to deliver drug from external canal to the inner ear and thus avoid repeated intra-tympanic injection. It requires tympanostomy tube, grommet, in the tympanic membrane so that the wick is passed through it. When soaked with a drug, the wick delivers the drug to the round window to be absorbed into the inner ear. It has been used to deliver steroid in sudden deafness and gentamicin to destroy the vestibular labyrinth in Meniere's disease. तो ये किस चीज़ से बनता है? पॉलीविनाइल एसिटेट. ड्रग को डिलीवर करने के लिए माइक्रोविक यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल ईयर से इनर ईयर तक, ताकि बार बार इंटरटिम्पैनिक इंजेक्शंस ना देना पड़े. ग्रोमेट होता है
एक विक्स पास किया जाता है और विक्स पे डिलीवर कर देते हैं ना। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, इट इज यूज्ड ओनली व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्स। तो कंजर्वेटिव प्रोसीजर क्या है, दे आर यूज्ड इन cases of vertigo in disabling is they are used in cases where vertigo is disabling but hearing is still useful and needs to be prevented. They are decompression of the endolymphatic sac. Endolymphatic sac का decompression करेंगे. Endolymphatic shunt operation. A tube is put connecting endolymphatic sac with the subarachnoid space to drain excess endolymph. मतलब एक ट्यूब डाल देंगे शंट की तरह. Now sacculotomy यानी fix operation. It is puncturing the saccule with a needle through stapes का foot plate से. Distended saccule lies close to the stapes का foot plate and causes easy penetration. Body tract procedure consists of placing stainless steel track through the stapes का foot plate. The track would cause periodic decompression of the saccule when it gets distended. Both these operations when claimed to have shown good results, but they could not be uh, reproduced by others and thus abandoned. Cochleosacculotomy is another similar procedure in which instead of saccule, cochlear duct is punctured and drained into the perilymph. Otic shunt. The procedure is performed with a curved needle passed through the round window to puncture cochlear duct. Basically, cochlear duct को puncture करते हैं. This one. So, selective section of vestibular nerve. The nerve is exposed by retrosigmoid and middle cranial fossa approach and section, taking care to preserve the cochlear nerve. It controls vertigo but preserves hearing. It is ultrasonic destruction of the vestibular labyrinth. So cochlear function is preserved. Once an important therapy, it is now being abandoned. डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं करना है, सैक्युलोटोमी कर लो, फिक्स ऑपरेशन, सैक्यूल को पंचर करो नीडल से थ्रू स्टेपी फूट. Now, destructive procedures, they totally destroy cochlear and vestibular function and are thus used only when cochlear functions are not serviceable. So, labyrinthectomy. So, membranous labyrinth is completely destroyed either by opening अरे गाइस आई एम सो सॉरी, लगता है मेरा आवाज़ नहीं आ रहा था मैं जब भी पढ़ रही थी. कोई बात नहीं. डिस्ट्रक्शन प्रोसीजर क्या होता है, दे टोटली डिस्ट्रॉय कॉक्लियर वेस्टिबुलर फंक्शन एंड दैट दस यूज्ड ओनली व्हेन कॉक्लियर फंक्शन आर नॉट सर्विसेबल. तो लैब्रिंथेक्टोमी होता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड either by opening through the lateral semicircular canal by transmastectomy or through the oval window by transcanal approach. This gives relief from attack of vertigo. मैं I'll summarize last में, ठीक है, कि क्या क्या हुआ. And then intermittent low pressure therapy जिसको Menet's device कहते, it is observed that intermittent positive pressure delivered to the inner ear fluid brings relief from the symptoms of the Meniere's disease. Meniere's से relief पाते हैं हम लोग कैसे, positive pressure intermittently डालने से. Not only there is improvement in vertigo, tinnitus, ear fullness, but hearing may also improve. Intermittent positive pressure wave can be delivered through the instrument known as
Meniere device, which has been approved by FDA. A prerequisite for such a therapy to perform myringotomy and insert a ventilation tube so that the device, when coupled to external ear canal, can deliver pressure wave to the round window membrane via ventilation tube. Pressure wave pass through the perilymph and causes reduction in the endolymph pressure by distributing it through the various communication channels such as endolymphatic sac blood vessels. Some believe they regulate secretion of endolymph by stria vascularis. The patient can self-administer the treatment at home. It may require a few months before complete remission of the disease is obtained. Meniere device therapy has been recommended for patients who have failed medical treatment or surgical option. Thank you, guys.